सब बंद। जब स्विगी, फूड पैंडा, जोमेटो आपके एरिया में बंद दिखाए, कोई डिलीवर नहीं करता इस टाइम पे रात के 1:30 बजे, तो क्या उपाय हो सकता है? So guys, let's cook some 5-minute meal which is very nourishing and I'm sure आपको भी अच्छा लगेगा. So what I'm planning to cook for you today is chicken kebab Maggi. तो आज हम बनाने जा रहे हैं 2 minutes Maggi noodle along with सीख कबाब, और ये जो है आपका स्पेशल मसाला वाला है which is a new addition to the Maggi Noodles family. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हमें चाहिए सिंगल मैगी, जो कि ये है, एंड दिस इज स्पेशल मसाला मैगी जो अभी रिसेंटली निकला हुआ है. और उसके अलावा हमें चाहिए 2 चिकन सीख कबाब. मैंने 2 इसीलिए रखे हैं, एज यू नो सिंगल मैगी से शायद पेट ना भरे, तो इसीलिए द कबाब सफाइज फॉर इट. सो द फर्स्ट स्टेप इज टेक वन ऑफ दीज, और इसमें आप सिंगल मैगी के लिए डालिए पानी. क्योंकि हम यहाँ पे कबाब यूज़ कर रहे हैं तो कबाब भी आपका पानी सूखेगा, सो प्रेफर कि 2.5 कर दीजिए तो सही रहेगा. ओके, नाउ I have to find my light. Okay, so once you find your light, just turn the flame on. The trick to preparing Maggi is कि आप कभी भी इसको ठंडे पानी में डायरेक्ट ना डालें, थोड़ा पानी इसको उबलने दें और उसके बाद फिर मसाला डालें जो इसके अंदर है. सीजर, and there you go, the masala Maggi maker. जैसे आपका ये बॉयल हो जा रहा है, it will take around a minute or so. Take out मसाला. जैसे ये बॉयल होता है, we'll return back. Okay, I'm back. So phase 2. यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपका पानी काफी उबल चुका है. So we'll put the मसाला into the water. This is how it looks. एक स्पून लीजिए and we'll do this. So this is our Maggi and those are the kebabs. इसके बाद हम मैगी को ब्रेक कर लेंगे like this. Next step आपका ये रहेगा, you have to cut this. I'll just cut it like this. Just drop it in. And now my friends, it's time to turn on the heat. Now as you know, I like my food really hot, and that's why मैंने ये टेस्टी ट्रीट का ग्रीन चिली सॉस लिया हुआ है. What I'll do is, it's according to your taste, but I generally prefer 2 spoons. Easy. 1, 2. आपका कबाब nicely being done. जी हाँ, और मैगी बनने में 2-3 मिनट और लग जाएंगे. मैंने पानी इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा दिया था ताकि आपका मैगी और कबाब पानी सोखता है दोनों. So it will be done in no time. And I think we are done. Your Maggi is ready and it's done. And as you see, your Maggi is really nicely prepared and it's done. And these are the kebab pieces. Okay guys, so moment of truth. Maggi बन चुकी है and I'm really excited.
This is how it looks. It's really hard. Yum. Guys, जब आपके पास कुछ ना हो, सारे डिलीवरी ऑप्शंस बंद हो, आप क्या करोगे? This is the only thing. You cook a very nice and nutritious meal, which is the Maggi, along with the kebab. It really goes well. Guys, if you like this whack, please subscribe, like, and share my channel. Bye.